हेलो फ्रेंड्स, वन पेपर MCQs में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखे हुए होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें हम डिस्कस करेंगे FIA के पास पेपर्स में आने वाले टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज MCQs। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाय किए। हमारा पहले MCQs है कि द ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड इज़, सो दुनिया का सबसे पुराना तराना जो है ये जापान का है, जिसको जापानीज़ में किमिगायो और इंग्लिश में अगर कहा जाए तो हिज इम्पीरियल मेजेस्टीज रेन कहते हैं। ये तराना, इसकी तारीख़ की अगर बात की जाए तो ये तकरीबन मिड 1800 से जापान का एंथम है और बीच में ये एडोप्ट हुआ था, लेकिन तराना वही का वही है। फिर फ्रॉम विच सिटी वर्ल्ड वार 1 स्टार्टेड, सो पहली जंग अज़ीम शुरू हुई थी, ये बोस्निया का एक शहर है सराजीवो, जहाँ पर एक सर्बियन पेट्रियट ने एक ऑस्ट्रियन किंग को या फिर शहजादे को गोली मारी थी। उसका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। ये हुआ था ऑन जून 28, 1914 और इसी से फिर पहली जंग अज़ीम की शुरुआत हुई थी। जबकि दूसरी जंग अज़ीम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि उसकी शुरुआत हुई थी जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। फिर कि हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर सराउंडिंग द अर्थ, सो एज पर May 4, 2023 7,702 satellites are surrounding the Earth orbit. CPU stands for, so CPU stands for Central Processing Unit and it is also known as the brain of the computer. फिर कि which state of USA is called the mother of states, so ये जो है वर्जीनिया को mother of states कहते हैं। वर्जीनिया को एक और नाम भी लेते हैं, उस वर्जीनिया इज आल्सो फेमस एज द मदर ऑफ प्रेसिडेंट्स। अच्छा, इसको मदर ऑफ प्रेसिडेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अमेरिका के तकरीबन 8 प्रेसिडेंट जो थे ये वर्जीनिया से थे। लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, सो इट इज़ द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। विच मुस्लिम कंट्री वॉन द मोस्ट नोबेल प्राइजेज इन द वर्ल्ड, सो ये जो है इजिप्ट है। इजिप्ट ने अभी तक जो है 4 नोबेल प्राइजेज जीते हैं, जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने अभी तक 2 नोबेल प्राइज जीते हैं। एक हमारे डॉक्टर अब्दुल सलाम थे और दूसरी मलाला यूसुफजई थी। द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वॉज हेल्ड इन, सो इट वॉज हेल्ड इन 1985 इन ढाका। सार्क वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द देन प्रेजिडेंट ऑफ श्रीलंका ज़ियाउर रहमान साहब। ये बात याद रखी जाए कि ये पूछते अक्सर कि सार्क किसकी दिमाग की पैदाइश थी, सो ये जो है ज़ियाउर रहमान साहब जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे उनकी जो है ये इनिशिएटिव था। फिर है कि नाइग्रा फॉल्स इज लोकेटेड इन, सो नाइग्रा फॉल इज लोकेटेड इन बोथ कनाडा एंड USA। आप पूछेंगे कि ये कैसे? क्योंकि इट एक्ट एज अ बॉर्डर बिटवीन न्यूयॉर्क एंड ऑन्टारियो। ऑन्टारियो जो है ये कनाडा का एक शहर है। फिर है कि फाउंडर ऑफ विकीलीक्स, सो द फाउंडर ऑफ विकीलीक इज़ जूलियन असांज और उन्होंने जो है विकीलीक को फाउंड किया था इन 2006। विकीलीक्स का जिनको नहीं पता, सो इस पर जो है अमेरिका के सीक्रेट डॉक्यूमेंट कह ले, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स कह ले, वो शाया हुए थे। फिर है कि द ओल्डेस्ट होली बुक इज़, सो सबसे पुरानी ओल्डेस्ट होली बुक इज़ द तोरा, जिसको हम उर्दू में तौरात कहते हैं और इंग्लिश में इसको ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं। ये तकरीबन 1407 को नाजिल हुई अकॉर्डिंग टू सम अनऑफिशियल एस्टीमेट एंड द वर्ड तोरा मीन्स इंस्ट्रक्शंस, हिदायत। फिर एक डैश इज नोन एज द कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो सेंटोस इज नोन एज द कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज़ द आउटर पोर्ट ऑफ सो पोलो, ब्राज़ील। शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इज, सो द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इज 22 दिसंबर, जिसको विंटर सोल्स्टिस कहते हैं, जबकि द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इज 21 जून, जिसको समर सोल्स्टिस कहते हैं। फिर एक डैश इज द हॉटेस्ट प्लेस इन आवर सोलर सिस्टम, सो इट इज़ द वीनस। ड्यू टू इट्स डेंस एटमॉस्फेयर इट इज़ द सेकेंड हॉटेस्ट प्लेस इन आवर सोलर सिस्टम आफ्टर द सन। इसकी जो है टेम्परेचर तकरीबन 900 डिग्री सेल्सियस है। फिर एक डैश माउंटेन रेंज इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, सो द पामीर माउंटेन रेंज इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड एंड द पामीर माउंटेन रेंज इज़ इन तिब्बत। तिब्बत जो है ये चाइना में है। फिर एक UN was founded on, so UN was founded on October 24, 1945 in San Francisco, California, after it was approved by the Senate and after the Charter of the United Nations was ratified by the 29 nations of the world. फिर है कि the biggest planet in the solar system, so the biggest planet in the solar system is Jupiter, जबकि सबसे स्मॉलेस्ट जो है इट इज़ मरकरी। जुपिटर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इट इज़ द प्लैनेट दैट वांट्स टू बी अ स्टार बट बिकेम अ प्लैनेट।
फिर है कि the Dome of Rock is located in, so the Dome of Rock is located in Jerusalem. जेरूसलम में जो मस्जिद अक्सा है, फिर Dome of Rock है जो पीली सी गुंबद है वो Dome of Rock है, फिर मस्जिद अक्सा है और फिर टेम्पल माउंट है जिसको हम मुसलमान जनरली मस्जिद हरम शरीफ या फिर अल अक्सा इन जनरल कहते हैं. NEC company belong to which country? So the NEC company belong to Japan. NEC stands for the Nippon Electric Company. It was founded in Tokyo on July 17, 1899. The federal judicial system in the world was introduced by, so the federal judicial system was introduced by USA because the USA was the first country that opted a federal judicial system through the Judicial Act of 1789, and it was put in force on 24th September 1789. Which planet rotates clockwise? So Venus rotates clockwise from east to west. जबकि अगर हम मरकरी, अर्थ और मार्स की बात करें, so it rotates from west to east anti-clockwise. The first railway line in the subcontinent was laid in, so it was laid in 1853, और ये जो है मुंबई और टेन को जो है या ताने इसको मिलाता था. Himalayan range is based in, so the Himalayan range is based in Asia. The Himalayan range is divided into 3 parts. एक पार्ट को द ग्रेट हिमालय कहते हैं जिसमें जो हाईएस्ट पीक है ये वाक़ है, दूसरे को मिडल हिमालय कहते हैं और तीसरे को द शिवालिक कहते हैं. अगर हम फेमस पीक्स की बात करें द हिमालयन रेंज, सो दे आर एवरेस्ट, K2 एंड नंगा पर्वत. जिस ये इन तीनों की जो ऊंचाई है ये 8000 मीटर से ऊपर है. AFP is the news agency of, so it is the news agency of France and it is the oldest news agency in the world. ये जो है 1835 को पेरिस में मारज़ वजूद या इसका क़याम हुआ था. It has 4 regional headquarters and it has news bureaus in 151 countries and 201 locations. फिर है कि स्कॉटलैंड यार्ड सीक्रेट एजेंसी बिलोंग्स टू, सो इट बिलोंग्स टू ब्रिटेन. लेकिन ब्रिटेन के बारे में हम बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि बस MI6 है. नहीं, स्कॉटलैंड यार्ड एजेंसी सीक्रेट एजेंसी भी है बट इट इज़ लिमिटेड मेनली टू द मेट्रोपॉलिटन लंदन. ये उस तक महदूद है, लेकिन कभी कभार जब ज़रूरत आती है तो ये जो है दूसरी एजेंसीज को लंदन से बाहर में भी मदद फराहम करता है. द मेन पर्पस और द मेन ड्यूटी ऑफ दिस एजेंसी इज़ टू मेंटेन लिंक बिटवीन द ब्रिटिश लॉ enforcement agencies and Interpol. The Golan Heights belong to country A and was captured by country B. A and B are, so ये country A और B जो है ये सीरिया और इसराइल है. ये बात याद रखी जाए कि in 1967 इसराइल एंड द अरब फोर्सेस जिसमें जो है इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया जो है they were the main actors. They fought a 6-day long war जिसमें जो है फिर इसराइल को बर्तरी हासिल हुई and it captured the Sinai Peninsula, the East Jerusalem, the Golan Heights. ये सब इलाके जो है ये इन्होंने जो है एक एक मुल्क से कब्जे किए, जिसमें सीरिया से उसने जो है गोलान हाइट्स ये कैप्चर किया था. फिर है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिटी बाकू. सो ये MCQs बार बार आ चुका है. The importance of city Baku is it is the oil center and due to its administrative functions. So बाकू जो है ये अज़रबैजान में है. The name of the parliament of China is, so चाइना की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस. It is the biggest parliament of the world क्योंकि इसके तकरीबन 3000 मेंबर्स है that are elected from 35 electoral units. So आपको ये पता होना चाहिए कि किस मुल्क के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, जैसे कि तुर्की के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं. इसी तरीके से फिर हमारा इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, USA, UK, इसका आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में अक्सर पूछा जाता है. फिर स्टीव जॉब्स वाज एन अमेरिकन एंड फाउंडर ऑफ, सो स्टीव जॉब वाज द फाउंडर ऑफ एप्पल. इसके अलावा इन्होंने जो है पिक्सार मूवीज़ की भी बुनियाद रखी एंड व्हेन ही डाइड सो ही हैड अ नेट वर्थ ऑफ अराउंड $10.6 billion. फिर कि हमास was founded by, so the Hamas organization was founded by Sheikh Ahmad Yassin in 1987 while the Hamas charter was confirmed or signed in 1988. इसका सिर्फ एक काम था, to liberate Palestine. फिर कि which of the following rivers is also called the Yellow River. So Huanghe River is also known as the Yellow River.
and it is the birthplace of the Chinese civilization. It is the second largest, longest river in China. पहले के फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी इन द वर्ल्ड वाज, सो इट वाज चाइना. इन्होंने जो है हान डायनेस्टी के टाइम पर इन 105 AD पेपर करेंसी इशू की थी. उस वक्त के एक कोर्ट ऑफिशियल थे जिनका नाम था साइलुन. इन्होंने जो है बनाई थी. एट दैट टाइम द पेपर वाज यूज्ड टू बी मेड फ्रॉम रैग्स. पहले के डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल इज सेट बाय. सो इट इज़ द फेमस कोट ऑफ इब्राहिम लिंकन. अभी जिनको नहीं पता, सो इब्राहिम लिंकन जो है ये अमेरिका के 16वें सदर रह चुके हैं. एंड हिज रीन वाज फ्रॉम 1861 टिल हिज असैसिनेशन 1865. ये जो है इनको फिर आखिर में गोली मारकर जो है ये ही डाइड. Who was the first Asian to receive the Nobel Prize? So इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर. जिनको नहीं पता, so he was one of the most renowned Bengali that I know of. इनका लिटरेचर में आर्ट, म्यूज़िक, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा काम था. He got his Nobel Prize for his work Gitanjali which was published in London 1912 और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था in 1913. Dash is the longest river in Europe, so Volga River is the longest river in Europe and Volga River is situated in Russia. Taqsim Square is located in Turkey and Tahrir Square is situated in Sosijab है Egypt. कायरो में भी एक फेमस स्क्वायर है, चाइना में है, यूके में है. इस तरीके से मॉस्को में एक स्क्वायर है. इस स्क्वायर को आप सर्च करें और आप इसको याद करें कि ये इंपॉर्टेंट स्क्वायर के जैसे रेड स्क्वायर हो गया, ट्रेफेलगर स्क्वायर हो गया, ये सब जो है इस तरीके से स्ट्रीट जैसे कि जेम्स स्ट्रीट और लम्बार्ड स्ट्रीट, ये सब स्ट्रीट्स, वॉल स्ट्रीट, इन सब का आपको पता होना चाहिए क्योंकि जनरल नॉलेज में इस तरीके के MCQs आते रहते हैं. अक्सर ऐसा होता है कि पेपर में दो तरीके के दो MCQs इस तरीके से आ जाते हैं. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट. पहले के द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इज, सो द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इज सिंगापुर. डैश इज अ कैश क्रॉप, सो कॉटन इज अ कैश क्रॉप. कैश क्रॉप जिसकी कीमत ज़्यादा होती है बेसिकली. Aung San Suu Kyi was a winner of Nobel Prize and she belonged to Myanmar. Total height of Mount Everest is, so it is about 8,850 meters. अगर हम to be exact बात करें, so it is 8,849 meters. Tiananmen Square is located in, so it is located in China. The Wall Street of New York is associated with, so it is associated with banking and finance. The Stonehenge is situated in, so it is situated in England. Who said that man is a social animal? So ये कौल जो है ये अरिस्टोटल का है. The largest country in the Arabian Peninsula is, so it is Saudi Arabia. Dash is also known as the land of the thousand lakes, so इस country का नाम है Finland. Dash is known as the founder of modern Turkey, so it is Kemal Atatürk, and the second person who is popular after Kemal Atatürk is Erdogan, who is recently been elected on 28th May as the new president of Turkey. Not the new president, but his reign is extended. The first man to sail around the world is, so that man is Ferdinand Magellan. Greenwich is situated in, so Greenwich is situated in London. अच्छा जिनको नहीं पता, so the GMT जो हम कहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का GMT +5 है, लंदन का GMT +0 है, इस तरीके से सारे मुल्कों का एक GMT है प्लस या माइनस. So the G in that GMT is this Greenwich. Greenwich is a place in London जिससे जो है we can say that from where the time starts, क्योंकि इसका GMT 0 है. GPRS stands for, so GPRS stands for General Packet Radio Service. Study of earthquake is called as, so it is called as seismology. USA consists of how many states? So the USA consists of 50 states. Who invented the paper? So it was the Chinese who invented the paper, and they also जो बारूद है इसकी इन्वेंशन भी चाइना में हुई थी. इस तरीके से पेपर की भी हुई थी. इस तरीके से कुछ और चीज़ें हैं इनकी इन्वेंशन भी चाइना में हुई थी.
डायलिसिस इज़ यूज फॉर द पीपल विद डिफेक्टिव. सो डायलिसिस जो है ये किडनी के पेशेंट के लिए यूज़ होता है बिकॉज हिज किडनी हैज़ स्टॉप और हैज़ रिड्यूस द फंक्शन. ICU stands for, so the ICU stands for intensive care unit. Which gas was first used in World War One? So the chlorine gas was used in World War One. इसके अलावा एक और गैस भी है, वो भी यूज़ हुई है. डोंट नो, अगर याद आ गया तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख लूँगा. लेकिन दो गैसेस यूज़ हुए हैं, एक क्लोरीन था और एक कोई और था. Average weight of human heart. So the average weight of human heart is 300 grams. International date line passes through which strait? So it passes through Bering Strait. Name of the marsh gas is marsh gas. The marsh gas was also used. So the name of the marsh gas is methane. Wealthiest city in the world is, so the wealthiest city in the world is New York. इसके बाद फिर सिलिकॉन्स वैली बे है और फिर टोक्यो है. चार्ल्स लॉ इज अबाउट, सो द चार्ल्स लॉ इज अबाउट गैसेस. द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियडिक टेबल इज डिटरमिन्ड बाय इट्स, सो सी जब है एटॉमिक नंबर. पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो पोजीशन है, जो उनकी द वे दे आर प्लेस, इट्स ऑन द अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स. The Cuban Missile Crisis occurred in which year? So the Cuban Missile Crisis occurred in the year 1962, and it was probably one of those moments, जिस moment में USA and Russia they came to a minute closer in engaging nuclear war. क्योंकि Cuba जो है it is almost on the boundary of America, क्योंकि if you have reached Cuba means you have reached America. So for that purpose it was a deadly crisis. लेकिन थैंकफुली वहाँ के यूएसए के जो सदर थे और यहाँ पर जो गोरबाचोव साहब थे, सो दे टैकल द सिचुएशन इन क्वाइट डिप्लोमेटिक मैनर, आई वुड से. ताशकंद इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? सो ताशकंद इज़ द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान. ताशकंद एग्रीमेंट भी हमारा एक हुआ है, सो यू माइट नो दिस प्लेस. Dash are formed after the melting of rocks. So after the melting of rocks, igneous rocks are formed. During Cold War, the official name of West Germany was, so during the Cold War, the West Germany का नाम था Federal Republic of Germany. The current UN Secretary General is, so इनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस. ये तकरीबन 2015 से सेक्रेटरी जनरल है तकरीबन. There are dash principal organs of the UN. So there are 6 principal organs of the UN. और एक और MCQs ये भी है कि there are 6 official languages या working languages of the UN. Who was related to the Watergate scandal? So ये American president थे जिनका नाम था रिचर्ड निक्सन. Watergate scandal ये एक famous scandal है. The capital of Turkey is, so the capital of Turkey is Ankara. अच्छा, कैपिटल्स भी आप याद रखें कि किस कंट्री का कौन सा कैपिटल है, अक्सर पूछा जाता है. अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? सो द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन कैटेगरीज. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज, सो द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज -273 डिग्री सेल्सियस, जिस पर सब कुछ जम जाता है. इमाम बुखारी वाज बोर्न इन विच हिजरी? सो द इमाम बुखारी वाज बोर्न इन 194 हिजरी. The current president of India is, so the current president of India is, she is a female and her name is Draupadi Murmu. Neptune spare operation was again, so the Neptune spare operation was conducted, if I am not wrong, by the CIA against Osama bin Laden. Nationalization of Suez Canal was done by President Jamal Abdel Nasser in, so it was done in 1956, and it is assumed and presumed that it was on the advice of Bhutto, so don't know. The most abundant element in the earth crust is, so it is oxygen. Hydrogen has dash charge, so hydrogen has positive charge. Formula of density is, so the formula of density is mass divided by volume. Laser was discovered by, so the laser was discovered by Theodore Mammon. The unit of surface tension is, so the unit of surface tension is Newton per meter. Speed of light is, so the speed of light is 300 million meters per second. It is 300 million meter per second.
द ऑथर ऑफ द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड इज, सो एक किताब है जिनके ऑथर का नाम है फरीद जकरिया। बोगोटा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, सो बोगोटा इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया। फादर ऑफ कंप्यूटर, सो द फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। ये MCQs भी बहुत दफ़ा आ चुका है पेपर में। To change font in MS Word, which shortcut key is used? So the shortcut key Control plus Shift plus F। अच्छा, जो हमारे पेपर्स होते हैं जिनमें जनरल एक कंप्यूटर का सेक्शन होता है 10% या फिर 20% जिसमें कंप्यूटर के MCQs पूछे जाते हैं, सो उसमें मेनली MS Word और MS Excel के MCQs ज़्यादातर आते हैं। मैं स्पेशलिस्ट की बात नहीं कर रहा, अगर कोई स्पेशलिस्ट का एग्ज़ाम दे रहा है जिसमें उनका कंप्यूटर मेन सब्जेक्ट है 60 या 70% है तो उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर कोई आम एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है जिसमें 10 to 20% कंप्यूटर है, सो जनरल कंप्यूटर MCQs, MS Word, MS Excel और जनरल MCQs पूछे जाते हैं। फेसबुक वाज लॉन्च इन, सो द फेसबुक वाज लॉन्च इन 2004 और इसके बानी थे मार्क जुकरबर्ग साहब, जो कि अभी इसके CEO नहीं रहे बिकॉज ही इज़ फोकसिंग ऑन हिज न्यू चाइल्ड द मेटा। International Human Rights Day is celebrated every year on, so the International Human Rights Day is celebrated on 10 December each year. फिर है कि Earth Day is celebrated every year on, so the Global Earth Day is celebrated every year on 22nd April. फिर है कि Bangladesh became the member of the UN in, so it became the member of the UN in 1974. Which continent is without glaciers? So Australia is without glaciers. Which of the rivers do not flow in Africa? So river Tigris do not flow in Africa. United Nations General Assembly UNGA meets every year for the new session. It happens in which month? So it happens in the month of September. The highest per capita income in South Asia is, so the highest per capita income in South Asia is of Maldives, and to be specific of the Maldives capital Mali. I think Mali is the capital of Maldives. Aden is the port city of, so Aden is the port city of Yemen. The country is situated below sea level, so इस country का नाम है Netherlands. It is situated below the sea level. Sea level means सतह समंदर. Which country has the largest number of islands? So the largest number of islands is in Indonesia. The largest gulf of the world is, so the largest gulf of the world is the Gulf of Mexico. Which continent has the most countries? So Africa has the most countries, and according to my unofficial estimate, I think it is the second largest continent in the world. Where was the highest temperature on earth recorded? So it was recorded in Libya. World's slowest land mammal is, so इसका नाम है sloth. The largest flightless bird is, so it is ostrich. शुतुरमुर्ग एक बर्ड है लेकिन वो उड़ नहीं सकता। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंचती है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार एक नए पास पेपर के साथ और बहुत सारे MCQs के साथ। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।